Yes. Good afternoon. I am audible. Yes. Audible. Yes, sir, you are audible. Good afternoon. Good afternoon. A very good afternoon to one and all. It gives me immense pleasure to welcome you all once again on fourth day of Faculty Development Program. I, Dr. Pragati Khare, feels privileged to introduce our esteemed resource person for today's FDP for session 1 on topic Machine Learning Foundations, Supervised Learning and Predictive Models in Drug Target Interaction by Professor Manish Pal Singh. He is Professor and Principal SRM, Modinagar College of Pharmacy, Ghaziabad. He has completed his PhD and M.Pharm in Pharmacology. He has total of 45 publications. He has also published 7 books and he has a work experience of about 18 years. He has also published 4 patents. Coming to the awards and achievements, certified nominee in CPC SEA by Ministry of Animal Health, Husbandry and Dairying Department, Government of India. Research Appreciation Award for secured DST SERP grant in 2022 by KR Mangalam University, Gurugram. Appreciation certificates in M.Pharm. He has also conducted several workshops and seminars. Total Scopus index is of 22 and his cumulative impact factor is more than 17. He has also achieved grant for conference and seminar ICCSR New Delhi of rupees 1,50,000 in 2025. He has also achieved a grant from DST SERP of rupees 1 lakh in 2022 and a grant for DST of rupees 1 lakh in 2019. So I once again welcome, sir. Kindly proceed with your presentation. Thank you. Thank you so much, Dr. Pragati Khare, ma'am. So such a nice introduction to about me, my some of credentials, and I am thanks to Dr. Satendra Singh, sir, to invite me on the prestigious FDP conference, and thanks to all the joiners for this occasion. And it's my privilege to extend a hearty welcome to all audience to join this FDP program. So once again, thanks. So, ma'am, if you allowed and sir allowed, can I proceed now? Yes, sure, sir. So, okay, ma'am. Just uh, now this is a visible, ma'am. Sir. Yes, sir. Thank you. Thank you again, all of the members, and it's a huge privilege rounds to about the 5 days online faculty development program is basically on the concept of AI and machine learning. So it's a very thematic issues in regarding the current scenario of our pharmacy education, and according to our Pharmacy Council of India is introduced in a NEP-2020 in a Pharmacy Council syllabus revision. So all of you aware now the some of the content, some of the subjects like a Python, AI, machine learning is also included in our new pharmacy syllabus. So I am again thanks to all organizer for this thematic issue on FDP development program.
is based on the machine learning and data analytics in our health scenario or in health education. So guys, I am especially focused on the basically machine learning or artificial intelligence is a common pattern to our recent scenario. It is a very common term to regarding the each and every person using the AI or machine learning or like a some of AI tool used in the academia, used in the IT sector, used in the health education also. So the today topics is based on the types, the conditions, the background features of machine learning, which is basically predictive in our DTI, drug target interactions. So Dr. Manish Pal Singh, and presenting here to the most thematic issue, AI and machine learning in our future pharmacy education in this FDP program. So first, all of you aware about the AI, and all of you aware about the what is the applications of AI. But here now we try to focus, we try to consider about the what is the applications of artificial intelligence, what is the basically applications of machine learning in object of targeting drug repurposing, in object of target like prediction of drug targets, drug to protein targets, drug to like action QSA remodeling, etc. So our pharmacy basically today scenario is utilized to chance the interaction study of drug with their target of receptors. So the first concept, what is the machine learning or what is the role of machine learning in drug development process? As you aware all of about the what is the traditional drug discovery or what is the machine learning. So first the concept is the traditional drug discovery is take a too much time, is a like a some of preclinical or clinical discovery. So about takes a 10 to 15 years of time consuming, billions of dollar, high cost, low hit rate, several the thousands of compound have entered into the trial of studies, but the sum of selected compound, the sum of hitting of the molecules have include in the potential groups of in the study. So the first concept, मेरा जो यहाँ पे the audience, target audience is I think the pharmacy students as well as the faculty member. So the first concept, what is the need of machine learning? Because our thematic issue is focused on the machine learning, na? So the first concept, what is the need and what is the significance of machine learning? So the answer of these questions are machine learning is provide the faster screening. Faster screening means what? Faster screening of our drug development trial process. The previously traditional learning is basically too much time. Clinical trial is a cost burden ratio, cost consuming process, time consuming process, even though the low hit rate to select the particular yield of compound. So in replacing of the machine learning or ML, we know the part of the AI. Machine learning is not a like a separate any part of the AI. The machine learning is the subdivisions of AI. Also include the deep learning is also the asset sub types of AI. So the machine learning is basically provide the faster of screening and better prediction to reduce the cost of drug development process. So now the first, there are the three terms: artificial intelligence, machine learning, and deep learning. And my question is, question of audience, it is all three separate divisions or a single? Or is one of the division included for AI? क्या ये सभी एक साथ इंक्लूड है या ये अलग अलग है? मेरा एक क्वेश्चन है ऑडियंस से, कोई भी मैम आप चूज कर सकते हैं जो इसका आंसर देना चाहते हैं. ऑनलाइन ऑडियंस, यस, प्रगति मैम, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. So can you help me to identify the one of any audience which is joined in this FDP session
So can you elaborate what is the difference or what is the reasons AI machine learning is separate or like a same field? Any audience? Okay. Audience kindly interact. Because na session is interactive is more interesting. Interactive, yes. Right. Any audience want to interact on this topic? Okay. So can I proceed, ma'am? Audience? Yes, please. Okay. So there are the three terms: artificial intelligence, machine learning, and deep learning. These are interpolated term which under the comes of which is the comes in the umbrella field of AI. So what is the AI? Artificial intelligence. Like we are a human, हम सभी एज एक अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो हमारे अंदर एक इंटेलिजेंस है. सो सेम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एनी like a replacing of human intelligence, not replacing of like a some of human intellectual properties. The artificial intelligence is the broad field, is just capable to enhance the performing task normally which required to the human intelligence. Now comes to the machine learning, ML. ML is a subset of AI which enter input to the labeled data, improve their performance, improve their predictions as compared to the human intelligence. Now comes to the third part of deep learning. Deep learning is also the subset of ML. So these are the three patterns. AI is a broad field, is an umbrella field. Machine learning is the subset of AI, and the last one, deep learning. So what is the deep learning? Deep learning is the artificial neuronal network to which multi-layer supports network which extract the complex of data, which read interpretation of the complexity of data and find out the possible interaction, find out the possible setup, find out the possible response of the drug target interactions in the terms of health. Now, what is the role of machine learning? What is the use of machine learning in drug development process? So if we can talk about the role of machine learning, the application of machine learning, अगर हम बात करते हैं कि हमारे फार्मा के अंदर या हमारे ड्रग डेवलपमेंट रिसर्च के अंदर मशीन लर्निंग का यूज क्या है, जो कि मैं एक बेसिक, अगर मैं फार्मा अपने ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात करूं कि उनके माइंड में एक आता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस जस्ट लाइक ए यूज ऑफ चैट जीपीटी, यूज ऑफ गूगल जेमिनी टू विच रिफ्रेश द डेटा, रिफ्रेश द मेल, रिफ्रेश द same. Like machine learning is a modern analytical tool, is a basically artificial tool which the what is the machine learning? Machine learning is just for the subset of AI. So this is basically collect the data, which is performing the data processing, which is provide the model evaluation and the prediction of new data. तो इसका new data means का मतलब क्या है? What is the meaning of new data? New data, for example, एक बहुत आपको एक सिंपल हेल्थ से हटके एक एग्जांपल बताता हूँ. आप और हमारे मेल के अंदर एक फीचर होता है स्पैम मेल, एक हमारे इनबॉक्स के साथ होता है स्पैम मेल. तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो मेल जो बेसिकली टूल सिस्टम है, these are automatically detect which mail is as a authentic and which mail is also the spam mail or like a some of unnecessary mail. So these are the same concept here. Machine learning is modernized, machine learning is applied for the drug development process, drug discovery process, for regard to target the interaction, to target the predictions in which drug disease diagnosis or personalized medicine. Now we comes to talk what is machine learning and the types of machine learning. So simply the machine ML is divided into the four basic reasons or four basic
types in the current scenario: supervised or unsupervised. There are the two basic division: the supervised learning or unsupervised learning. What is the difference? As just I have give the example, email spam detection. So this is the supervised learning. यहाँ पर उस सॉफ्टवेयर के अंदर इस चीज को लेबल्ड किया हुआ है कि which message या which type of information as a spam detection and which type of information detect as a authentic information. The same, the machine learning or the ML is first one type is supervised. Supervised means learn from the labeled data. Labeled data means what? Labeled data means the particular supported by the human intelligence, जिसने उसको फिक्स कर रखा है, प्रिडिक्ट ऑलरेडी कर रखा है, and then machine learning identify, like in the term of health, disease diagnose, drug target interaction, predictions of target interactions. These are the only for labeled data. And now comes to the second one is unsupervised learning. Unsupervised means that is the unlabeled data. For example, the customer clustering, patient segmentation. For example, if we can input the data in like a sum of software, so they identify the patient as a in the form of IPD or OPD. So unlabeled data का मतलब हो गया, unlabeled data means discovered the something of hidden patterns, and labeled data already predictable. हम इसको दोनों तरीके से समझ सकते हैं कि प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल. तो प्रेडिक्टेबल साइट्स फॉर डेटा इज कॉल्ड द labeled, and labeled data always the utilized tool as a supervised learning, and unsupervised learning is learn from the unlabeled data. So these are the basic two types, the basic two divisions of machine learning is supervised or unsupervised. Now comes to the third one is semi-supervised, or like some other divisions, like for example semi-supervised. So what is the difference between the supervised or semi-supervised? Basically, these are the two divisions. If the data is labeled, so the learning of machine learning set of type is supervised. Data is unlabeled is called the unsupervised. But if the data, some amount of data is a labeled and large amount data of unlabeled, like a predict data, a small amount, or unpredict data is a large amount. So these are comes under the semi-supervised learning in machine learning process. So for example, in case of, we can talk about the MRI, medical image classification, rare disease detection. These are the semi-supervised learning. And if we can talk about the simply without the non-health area, is a, so what is the supervised learning? What is the labeled data? Simply email spam detection. Now the third one, exploration. What is the key features of supervised learning data? So the supervised learning data is basically process of data input X, data input output data labels Y. So what is the meaning of here input and output labels? The input labels means input use label data set, means label data set which is the predictable, जो हमें ऑलरेडी हमारे द्वारा हमारे थ्रू उस मशीन लर्निंग के थ्रू प्रिडिक्ट किया गया लेबल ट्रेनिंग डेटा, which is the process of machine learning, like a common algorithm is used. For example, these are the listed algorithm: linear regressions, decision tree, random forest. These are the some basic mechanism. So what is the supervised learning application here in health sector area, or like some drug target interaction? First one, it can be used in the sum of disease diagnose. It can use in the term of DTI, drug target interaction prediction. Or if we can talk about the basic journal area, if it can be used is like a spam mail filtering. So these are the basic key features of supervised learning or unsupervised learning. So the audience, my basic, the keynote or like a key points, this particular divisions of types of machine learning. If we can talk about the supervised learning, always the labeled data, predictable data. If we can talk about the unsupervised learning,
we only consider as a unpredictable data is. So now when we talk about the some more examples for organized or some process by the supervised learning in drug discovery process. For example, we can talk about the virtual screening. So virtual screening means what? एक फॉर एग्जाम्पल एज अ कोलोजिस्ट और एज ए फार्माकोलॉजिस्ट पर्सन, यहाँ कई ऑडियंस होंगे, तो अगर मुझे किसी ड्रग का एनालिसिस इफेक्ट देखना है या मुझे कोई केमिकल स्ट्रक्चर का, किसी अननोन केमिकल स्ट्रक्चर का अगर मुझे एक्शन फाइंड आउट करना है, तो वी कैन यूज द सिंपल बायोलॉजिकल स्क्रीनिंग लाइक सम केमिकल स्क्रीनिंग और लाइक सम ऑफ अदर मेथड. Similar, the virtual screening means what? Virtual screening is a part of ML, machine learning. It is simply chemical structure, and simply chemical structure can be fit, can be bind, can be affinity with the particular target. Target means their particular receptor, particular site, or particular therapeutic place which drug can be produced their action. What is the prediction output if the data is supervised or if the data is predictable in the case of virtual screening? अब इसमें से हम क्या देखेंगे भाई, दो चीजें होने की संभावना बनती है, पॉसिबिलिटीज बनती है. इफ द प्रेडिक्शन इज करेक्ट through the supervised learning data or like a DTI, like a drug target interaction is active, or in case of any not any affinity found, data is an inactive compound. For example, अब इसके लिए हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. If we can talk about the like a QSAR, all you aware about the basic term of QSAR and what is the role of machine learning here? In this condition, machine learning can be predict physiochemical and structural descriptor. So what is the basic output? अब इससे output machine learning क्या देगा? For example, we can know about the what is the basic affinity score. Abhi, now in the upcoming slides, we consider about the drug targets interactions studies. So what is the, if we can talk about the affinity score, if we can talk about the EC50 effective concentration, किस ड्रग की biological जो उसकी therapeutic concentration है या IC50 है, we can find out the more quickly, more precisions through the ML learning, or especially for through the supervised learning in drug development process. Now comes to the drug target interactions. So when we talk about the drug target interaction in machine learning, or like some AI tools can be utilized in the prediction of drug targets. So first we aware, as a suppose the most of the audience is engaged in the pharmacology or something like related to pharmaceutical chemistry subjects in their course like M Pharm or B Pharm. तो ये मान के चलते हैं कि दो टर्म जरूर हमारे पास क्लियर होंगी. फर्स्ट इज एफिनिटी एंड सेकंड इज द इंट्रिंसिक एक्टिविटी. एनी ऑडियंस, एनी वन ऑफ द ऑडियंस कैन बी describe what is the difference between the affinity or like a intrinsic activity? कोई है आप में से जो बता सकता है affinity क्या होती है? Anyone? Affinity is just to hit the drug. The Hello, ma'am, you can unmute yourself. Please. Hello. Yes. Yes. Someone raised the hand, sir. Yes, please give your answer. Give the answer. Pragati ma'am, please can you help the one of audience? Yeah, Neha ma'am. Yeah, you can unmute yourself. Please. Neha ma'am, please. Sir, affinity means the ability of a drug to bind to a receptor, whereas intrinsic activities are the ability of a drug to activate the receptor and produce a response.
Very good, madam. Thank you so much for like a differentiate about the drug affinity or drug intrinsic activity. Okay. अभी आपने बिल्कुल बहुत क्लियर एक चीज आइडेंटिफाई की. व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्रग टारगेट इंटरेक्शन वी डिस्कस अबाउट द two things. One is drug receptor targets. So one drug molecule bind their biological targets. We all aware about the like a drug target. What is the meaning of affinity? Affinity just relate to the how much amount the drug and how capacity of the drug bind with their target area. In the form of target or drug target interaction, we can classify further the drug having the agonist or partial or like a reverse agonist or either the antagonist. But now the utilize of tool of machine learning. The question is, if the drug target interaction, if the drug target like compactiveness is available in the traditional drug development process, so what is the need of here? The need of here for ML or AI to faster and more effective drug discovery. So how it is possible to difference between the target traditional drug development or machine like machine learning drug development? If we can use the sum of drug target interaction DTI with the through of machine learning, there are the one of drug. For example, molecule X, like a drug or chemical structure, bind there the sum of a protein Y. So our machine learning computational methods, like a sum of tools, AI tools can find out how much affinity is scored. What is the possibility area? So why it is a how can it is a possible? It can possible by the two divisions of ML. Like हमारी मशीन लर्निंग के दो डिवीजन अभी मैंने डिस्कस किए थे. फर्स्ट either in the supervised or labeled data or either the unsupervised or unlabeled data. So but the basic output of machine learning, the basic output of machine learning to fast prediction, to fast interaction prediction, either the drug is in their targets is interacting or drug protein targets is a non-interacting according or basis on their binding affinity score. For example, if we can talk about the binding affinity is like a required of some drug here, like a sum of I think so 9.25 mole and the interaction probability is 0.85. So what is the mean? Means is we can target the which best candidate, which best chemical structure molecule to hit their targets, to hit their receptor sites to prediction the output of drug actions. So basically the simple एक बिल्कुल summary यहाँ पर आ जाती है कि machine learning is basically applied to enhance, apply to precisions, apply to improve the success rate of drug development process with as compared to traditional drug or like a traditional drug development process. So it is a very speedy process. It is a very precision process. It is a very like a less error process, because clinical trial studies having the sum of more human errors can occur, more conditional error can occur, cost burden can occur. So these are the some differences. These are the sum of changes to here in the drug target interaction in machine learning. So the question is, what is the source? What is the source of drug target interaction predictions? So these are the three basic sources. If we can talk about the drug database and if we can about the protein target database, तो यहाँ पर पहली चीज आती है कि if we can like a drug target interaction, so what is the source? The question is हम जाएं कहाँ से मिलेगा ये source हमें? The drug database source is like a drug bank, Campbell. Okay, these are the some of examples. These are the some basic source databases. For example, we can go through the literature survey. जैसे हम सारे हमारे कई जो स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट,
if we go through the some of literature survey, some of the topic in scientific database, तो scientific database के लिए हम क्या use करते हैं? For Google Scholar, for like Science Direct, Mendeley, right? Reference manager के साथ साथ we can go through the sum of PubMed. So same like the sum of databases is provide the drug source, drug structure, information about the bioactive molecules. Some of the database is provide the information of protein and targets like a uniprot. Uniprot is the basically provide the protein sequence. Some of database is a interaction database. For example, binding DB is basically provide the how much affinity score, how much interaction prediction possibility occur after the drug protein targets. So basically these data source, like a drug data source, like a protein data source, like an interactive data source, utilized with the machine learning to provide the precisions drug target interaction DTI with accuracy form as compared to traditional machine learning. So now the drug protein features in DTI. So the previous slide we discussed about the various data source, and the current slide we can discuss about the what is the characters, what is the features in DTI drug target interaction through the utilization of machine learning. So basically when we talk about the which characters utilized through the drug target interaction through the machine learning, the basically in the drug features basically having the some of molecular characteristics, we can talk about the protein features like a represent sequence, structure information of the targets, evolutionary information, past information, we can talk about the some genetic sequence. So we can utilize the protein features. If we can talk about the drug targets or drug features, we talk about the physiochemical properties of the drug. It same like a traditional method. So what is the happen? What is the possibilities to drug and protein features in the DTI predictions? One, exact chemical target like a hit molecule. Two, bind with the proteins, bind with the amino acid sequence. How the drug compatible affinity in the term of affinity, in the term of the sequence, in the term of for example the amino acid sequence to compatible with the target of receptors. So when we extract the exact of drug feature extraction, we exact the protein feature extraction, combinedly the feature representation in the scenario of drug target interaction prediction model. So the again apply the types of machine learning in the form of either it is a supervised or unsupervised, or is a data is a labeled or unlabeled data, but no conditions the data is a label or unlabeled. But however the machine learning here apply the more precisions, more effective and less time consuming to prediction of the drug on their targets protein or drug target receptor. Is it interactive, it is a useful, or either the non-interactive, non-useful in the lead series of the compound, and find out the best candidate to respective of the drug target or drug protein interaction. So for example, here we can discuss the one of case. Then I come to this table. Okay, guys, all of audience, just I have request to see the case. Just I have collect the one of study of a literature survey or literature data through the PubMed. The one of the case study is AI assisted identification of anti-cervical cancer phytochemicals. Okay, so in this study we can use the PICO model. So first
what is the aim of study, what is the objective of study. जैसे कि हम सभी को पता लग रहा है कि अभी हम बात कर रहे थे कि मशीन लर्निंग का हेल्थ केयर में ये यूज है, प्रिडिक्शन करता है, अचीवमेंट टाइम एफिकेशियस है या एक्यूरेसी उसकी काफी ज्यादा है, बट द क्वेश्चन इज हाउ. सो वी कैन सी इन दिस एग्जांपल व्हाट इज द objective of machine learning in respect to drug target interaction in this particular case. In this case, the artificial intelligence or like a machine learning in the form of molecular docking or QSAR studies identify the 6 lead compound in the term of one of the natural herbal source is a treatment used in cervical cancer. So out of 22 phytochemicals, the 6 lead compounds selected through the drug and target compatibility with the use of drug target interaction analysis through the sum of like machine learning process or like a sum of AI assist identification process, like in the form of molecular docking, in the form of QSR studies, in the form of in the previous listed sum of supervised or unsupervised machine learning process. So what is the process after the process of this research study, after the process of the data of this research? What is the key findings? There are the two main key findings of this particular plant is tropical chickweed plant into 22 phytochemicals identified out of 6 as a lead. Means traditional, अगर हम इसको traditional करते तो they are the more time consuming. One compound is like a check with their compatibility with the receptor or with their compatibility with the some therapeutic conditions. But the machine learning identify with the less time consuming. Sorry. So there are the 6 lead compounds, only the one best candidate. Out of 6, one best candidate in the relation to the one of potential flavonoids as called quercetin. In this, the particular related compound emerges the best candidate for the treatment of cervical cancer. So how it is a possible? It is a possible by these examples, these tools utilized in the machine learning process. So for example, if we can talk about the molecular docking, so which model can we use? We can use in the DTI process, DTI prediction and machine learning docking based. So stimulate drug binding to protein structure. So what meaning here to drug binding to protein structure? Already in the like a previous slide we have discussed. अभी हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था. There are the sum of source like a drug data source, like a protein target source, like a drug target predictions utilization source. So these are the source to identify the hit or identification of the predictions of the drug target interactions. So same in this study, the one of molecular docking or one of the tools, machine learning tools utilized to identify the lead compound through the out of 22 phytochemicals to the quercetin is emerged as the best candidate to treatment of in a cervical cancer. So this is the best, or this is the as a current examples to identify why machine learning utilize in a prediction of drug target interaction or to prediction of the drug receptor compatibility process as compared to more effective as compared to traditional drug development process. So now the summarization, now the conclusive note in the particular like machine learning or AI to applications in our health sector area.
already in the previous slide, or even though the previous example, we have already discussed how the particular machine learning, or how the drug prediction target like a tool, molecular docking, QSAR, GCA, LCA is utilized to the predictions of drug binding or affinity their targets, or affinity to their hit targets, to compatible or either incompatible. So these are the all uh, benefits. These are the all comes like a process of through the supervised or unsupervised data. We have already discussed in the types of learning. So now a summarization of the all the previous slides. So summarization of the machine learning AI in a pharmacy, or some of the already basic ML tool utilized in the drug target interactions. So already we all aware about the disaster of COVID-19. आप और हमने सभी ने कभी कोविड-19 का डिजास्टर फेस ही किया था 2020, 2021, 22. And one of the emerging field, one of the emerging application of drug is repurposing. So these are the basic like a sun ray. अब इसको हम क्या कह सकते हैं? These are the hope for like a upcoming disaster. A drug repurposing for any like a drug, for any like a therapeutic class of drug, utilize with the new therapeutic use. We can use here the machine learning process to identify the new therapeutic action, like a new like a therapeutic class, which is for the existing drug. It is a time saving process, or it is a cost burden reduced process in the drug development process. Same the ML like a machine learning, we can also use the toxicity predictions. Now with different types of like a tools, different types of software like a Toxi Pro, and we can use the evaluation of the potential toxicity. If we can talk about the like a segment 1, 2 in the term of fertility study, toxicity, in the teratogenicity studies, in the mutagenicity studies, we can fasting their process by the help of some of machine learning process. So these are the basic benefits. These are the basic like a scope which machine learning comes under the healthcare sector. Machine learning comes under the benefits of personalized medicine. Machine learning comes under the benefits of drug target predictions. So these are the basic process. These are the basic areas which can perform the machine learning tools, machine learning applications can utilize in the pharmacy application. So overall, again, the content of the first slide. What is the basic use of machine learning in healthcare sector? So these are the only 3R. The 3R concept is the reduction, reduce, and reuse. So same here, the machine learning reduce the time, reduce the cost burden of unnecessary research burden, but they also improve the success rate. But they are the sum of challenge. Okay, yes, machine learning is a utilized tool. Now the current scenario, Pharmacy Council of India is also launched the basic new curriculum is like a Python in first semester, like a some of AI like information in their curriculum for new syllabus, but the challenge, but they are the sum of difficulties, and utilize the machine learning and DTI predictions. What is the challenges? What is the basic limitations? There are the one is a limiting data source. I think so as a pharmacy or as a pharmacy person, we
not too much aware about the where we can utilize, we can source the data of drug information, drug target interactions, predictions model, which tools utilize as a toxicology, which tool utilize in the predictions of machine like a drug like a drug affinity or intrinsic activity. So these are the basically challenges, these are the basic resources challenges. And over, even though ethical issues is also the one of the challenges. Why ethical issues? Because AI is not a human intelligence, right ना? एक हमारे सामने और हमारे बच्चों के सामने एक चीज आती है ना कि एआई आने वाला है, लोग रिप्लेस कर दिए जाएंगे. नो, these are the sum of ethical, these are the sum of like a challenge, because human intelligence cannot be replaced by machine learning or like artificial intelligence. Our intelligence is most superior, right? But the tools, there are the like a useful tools, useful computational tools can be faster over their process. So these are the some challenges. But when we go through the some of our future or our future scope of machine learning or AI in our pharma healthcare sector, or our healthcare sector, or especially in drug target prediction, DTI predictions, it is a very, very important tool, time saving tool to know about, to hit about, to prediction about the exact drug efficacy, drug repurposing, disease identifications. It is basic emerging area, or basic like a futuristic area of machine learning process. So guys, now here I am like a complete my presentation. These are the some references. You can capture this slide and go through the further like a study if you want to study the some process, or like a some of further study. You can utilize the references section. So I think so my part is over. If ma'am, Pragati ma'am, if Yes. Dear audience, if you have any queries, kindly ask. You can also use chat box for your queries. yes, please. Thank you, sir, for such an beautiful and informative session. Thank you so Yeah, much, sir. Thank you. And thank you all of your organizing team, especially all the organizers, my good wishes. And for the, this is the very, very informative. I'm just share the one of things, and thanks to all the organizers, especially Satendra sir and you ma'am also. The thematic issue is raised by this FDP na, is basically help to our audience or help to our students to learn about the AI. And AI is basically emerging tools or emerging sectors, is also the involving in the new syllabus. I think so. The semester 1 is starting in the basic Python or like AI learning is required in our health sector students. So thank you, ma'am. Thank you so much for inviting me. I request, yes, sir. I request director sir to give the vote of thanks. Yes, good afternoon, everybody. Present over here. Speaker. Thank you, sir. Everybody present over here. On behalf of BPS Educational Institution of Pharmacy, ETA, I feel privileged to extend my heartfelt vote of thanks to our esteemed resource person, Mr. Manish Pal Singh, for delivering a session on machine learning, foundations, supervised learning, and predictive models in drug target interaction. Sir, your valuable information
have thrown a light on this scary topic for the pharmacy pupils, because everybody from pharmacy background, they are scared of this computer, AI, machine learning, data science. But your expertise explained it in a well manner. So thank you very much from our BPS Educational Institution of Thank you Pharmacy. so much, sir. And thank you for all the audience, those who have joined us for today's session. Thank you. Thank you very much. Thank you, Manish sir. Sir, thank you. Thank you. Dear
हेलो। एक चीज है यार, ये मैं वो कल देख रहा था यार, किसके जैसे वो भेजता था तो नीचे से फुहारे यहाँ से लेके यहाँ तक निकलते थे। किससे हो रहा है, किससे होते हैं क्या? सिंगल आ रहा है। हेलो। स्क्रीन बंद है क्योंकि वो यूट्यूब पे चल रही है। हेलो 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 माइक माइक कर रहे हो। Hello.
Hi, good afternoon, everyone. Good afternoon, everyone. A very good afternoon to one and all. Welcome in the second session of FDP on hands-on experiment for basics of AI machine learning for pharmaceutical science. I welcome Professor Manas Ranjan M. Raut, sir. Sir, kindly proceed with your presentation. Are we expecting more people or we are going to start with the 16 people? Dr. Manas Ranjan M. Raut is PhD, MBA, IAM, Diploma in Pharmacy. Executive summary is results-driven life sciences executive and serial entrepreneur with 24 plus years of experience in market research, competitive intelligence, business intelligence, strategic management, artificial intelligence across pharmaceuticals, medical devices, clinical research, OTC, e-pharmacies, healthcare, and hospitals in investment banking. He has 5,000 plus market research assignments, 10,000 plus students and professionals trained in AI, 3 impact ventures found, leadership roles, empirical consulting, School of Life Science. Industries served are pharmaceuticals, medical devices, clinical research, diagnostics, healthcare and hospitals, investment banking. His core competencies are in market research and intelligence, competitive intelligence, strategic management, business intelligence, KOL and clinical research, market entry strategy, sales force benchmarking, generative AI coaching. Coming to the his key achievements are as follows: 5,000 plus projects delivered, built empirical consulting, trained 10,000 plus students, 2,000 plus faculty, and 15 plus corporates. Pioneered life sciences AI platforms, contributed to Telma launched NovoMix and NovoRapid. So I welcome, sir. So kindly proceed with your presentation. Okay. Good afternoon, everyone. Thank you so much, ma'am. Are we expecting more people? Sir, Or- you are mute. Kindly open your mic. Hello. Manas sir, I am not in mute. you are mute. Your voice is not audible. जी कैसे मानस सर को करो कैसे क्या लेफ्ट द मीटिंग Am I audible now? Hello. Am I audible now? ये आवाज या तो वॉइस कम है उनकी वो बोल तो रहे हैं वहां से कहाँ आ रही है Hello. I Am I think audible sir, now? your volume is a little bit slow. Just increase the volume from your side. Sir, my volume We is can see already that you increased. are trying to speak something, but voice is not audible. You just open the volume button. You have opened your mic, but your volume buttons are a little bit in lower side. Am I audible now? Yes. Is it audible now? Hello, hello. Can somebody confirm? Am I audible? Sir, yes, your
voice is coming, but it is very fainty. It is Sir, hard my to audible. volumes are absolutely intact. My volumes are absolutely intact. My volumes are absolutely intact from my side. It is okay, na? Manas sir is speaking. Yes, sir. It is okay, sir. You can Now it is proceed, sir. okay. Now it is okay. You can present your presentation. Is it okay now, Satyendra sir? Is it okay? Can somebody confirm? Can somebody confirm is my voice coming in? Can somebody confirm that my voice is coming in, ladies and gentlemen? Satyendra, okay, Aditya, okay, great. So good afternoon, everyone. Thank you so much for a quick introduction. My name is Dr. Manas Sanjan Raut, and just a very quick introduction from my side. Hope I'm audible now. Pragati ma'am, am I audible Yes, sir. now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So there was some lagging, I think, in terms of internet, and now it's absolutely up and running. So, ladies and gentlemen, once again, very good afternoon to all of you. Introduction कितना भी लंबा हो या कुछ भी हो, by profession I am a pharmacist. Just to tell you a quick backdrop about myself, I'm into pharma industry since last 25 years. Started my career as a medical representative way back in 2002 with a company called Glenmark. Then moved to Novo Nordics, and in a span of around 6 years, I became area manager in Torrent. Then I became regional manager in Torrent. I went to Torrent, Kenya as a country head. In a span of 17 months, I got an opportunity to handle around 17 countries. From there, I moved to Torrent, Germany, and I handled the global API business back at Germany for Torrent Pharmaceutical. Then came back to India, joined consulting, worked there for around 8 years, and then I started this venture called Empirical Consulting. So I believe I'm coming from a small town of Raurkela, Odisha. Started my career in Delhi, staying currently in Delhi. So thank you so much, Satyendra sir, for quickly catching me into the AI interface. So I'll make it more interactive rather than speaking, presenting something. I'll definitely present something to all of you. But the AI bubble which is going around the market, ये जो AI का पूरा चल रहा है मार्केट में, I don't know how many of you are gets hands on AI सब करते जा रहे हैं. So आज से 6-7 महीने पहले one of the IBM guy put in the LinkedIn that my 13 years of the job has been taken out from me within 13 seconds. Ladies and gentlemen, just listen to me very carefully. I urge you, all of you, I'll try to make it more interactive for next 1 hour. 6 months before or 8 months before, somebody from IBM put it in the LinkedIn that my 13 years job in IBM has taken backshit within 13 seconds. Technology is becoming very dangerous. So, ladies and gentlemen, somebody picked in and tell that no. Technology is never been dangerous. If you are not going to adapt the technology, it is going to be highly contagious. It is not going to be dangerous, it is going to be contagious. Every day, ladies and gentlemen, every day, ये कोई एक दिन का काम नहीं है कि आज मैं बैठूंगा, आज मैं ट्रेनिंग करूंगा और मैं AI सीख के यहाँ से चला जाऊंगा. There is not a single platform in the entire world which can going to teach you AI in a single day or over a period of 1 month. जो चैट जीपीटी अभी आप देख रहे हो, उसकी शकल सूरत 1 साल पहले कुछ और था. जो क्लाउड आप देख रहे हो, उसकी शकल सूरत आज से 1 साल पहले कुछ और था. कंपटीशन जितनी तेजी से जा रहा है, मैं अगर आप सबसे पूछूं, जो आपके पास मोबाइल फोन है, क्या आप उसको 10 साल यूज करना चाहोगे? फॉरगेट अबाउट 10 साल. क्या आप लोग 3 साल उसको यूज करना चाहोगे? क्यों नहीं करना चाहोगे?
आंसर बड़ा सिंपल है कि मेरी डिवाइस में जो अभी है वो अगले साल चेंज हो जाता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है। मैं बोलता हूँ मेरी मोबाइल में इतनी रैम है, कैमरा बहुत अच्छा है, मैं जब फोन करता हूँ क्लैरिटी ऑफ वॉइस बहुत अच्छा है, मेरी रैम अच्छे होने की वजह से मेरी सर्चिंग कैपेबिलिटी इज वेरी वेरी गुड। जब हम अपनी मोबाइल को भी 3 साल नहीं यूज करना चाहते हैं, जस्ट इमेजिन कि मशीन लर्निंग एआई का क्या डायनामिक होगा, क्या डायनामिक होगा। और हमारी कंपटीशन किससे है? मैं फार्मा की पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं। हमारी कंपटीशन, whether we are a faculty or a student or a professional, हमारी competition is with China. Ladies and gentlemen, हमारी competition is going to be with China. And do you know, चाइना में 6 साल की बच्चों को AI मैंडेटरी कर दिया गया है। Pay attention for next 1 hour. I'm going to spare only 1 hour with all of you, and my sincere gratitude to Satyendra sir to catch me in this conference, the FDP program. 6 साल की बच्चा हमारे साथ कंपटीशन करने वाला है। मतलब मेरी जो कंपटीशन चाइना के साथ है, 6 साल की बच्चा ये पढ़ रहा है, हम बोल रहे हैं हमारे पास समय नहीं है पढ़ने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, अभी अगर आप कोई भी एआई के ऊपर कुछ भी कर रहे हैं, there is a global war going on between in the AI market space. वो war है यूएस एंड चाइना का, and China has surpassed US in terms of technology when it comes to AI. मैं एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाता हूं आपको, जो 2019 का वीडियो बिफोर कोविड। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इस वीडियो में और आज की डेट में क्या डिफरेंशिएशन क्रिएट हो गया है। कैन समबडी कंफर्म मी वंस सी माय, मेरा स्क्रीन अगर आपको दिख रहा है थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए कोई एक। Yes, sir. Yes, sir. It's visible. ओके, मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूं, थोड़ा सा मैम कंफर्म कर दें कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही। Now, it's a pleasure to be here in Las Vegas to Yes, sir. present It's to you. audible. ठीक है, मैं आपको, my sincere request to all of you, ladies and gentlemen, this is a video which popped in 2019. This video is by Azure Technology, Microsoft. Just to tell you, ladies and gentlemen, I'm a pharma guy. I did my MBA, then I did my PhD. I'm not a tech guy. Over last 1 year and 6 months, I got into AI and try to understand that कि AI may be सीख सकता हूँ. And if I say that कि मैं भी सीख सकता हूँ, my personal belief is that pharma हो या कोई भी segment हो, if you have a urge, if you have a interest to learn, then you can learn. ये कोई IT का काम नहीं है. So just pay attention for few minutes. I am going to play a video which is going to blow your mind. 2019 का वीडियो है, फिर मैं अभी की रियलिटी आपको बताता हूँ. I did do keynotes across the globe. And while it's easy for me to be here in Las Vegas, it isn't always easy for me to travel across the world. Now, it's a pleasure to be here in Las Vegas to present to you. Now, I get invited to do keynotes across the globe. And while it's easy for me to be here in Las Vegas, it isn't always easy for me to travel across the world. And even when I do, I can't always speak the local language. Well, what if neither language nor distance mattered for me to deliver a fantastic keynote? What if technology could help me be anywhere I needed to be and speak any language I wanted? Well, it can. We are bringing together the power of mixed reality and Azure AI services to create a truly game-changing experience. What you're about to see is an exact hologram of me wearing the same outfit that we recently captured at a mixed reality studio. And I don't speak Japanese, but what if I wanted to deliver my keynote in Japanese? Using Azure AI technology, I can translate my English into Japanese and train it to sound exactly like me, the same voice tones, those same inflections. And we brought this together, my hologram and Azure AI, to show you what's possible. So first, I'm going to put on my HoloLens 2 here, and then we'll flip in the room to the special camera so you can see exactly what I'm seeing. Let's get started. First, let me introduce you
to mini me. There she is, my perfect hologram. And thanks to the power of HoloLens 2, she just floats right with me. I'm literally holding my hologram, so natural. Now she's a little small to do a keynote. So let's get her up so she can do full-size Japanese keynote. Render keynote.ホログラムになる気分は本当に驚く出来事があります。私たちは最新の複合現実キャプチャ技術を使用し、私のホロ So, ladies and gentlemen, this is a video which popped in 2019. 6 साल बाद, 7 साल बाद, story got completely changed. Azure technology, Microsoft, which is one of the leading company in the IT segment, I repeat again, which is the leading company of IT segment, which is not a leading company in AI today. Just mind you, which is not a leading company in AI today. They dream कि हम इसको ऐसे एक hologram technology launch करेंगे. The hologram technology before coming into the market got completely wiped out. Now the new technology is called clone technology. Clone technology is super powerful. मैं आपको example देके बताता हूँ. आप शायद और अच्छे से समझ पाएंगे. Suppose करो मैं मानस मेरा एक क्लास अभी schedule है. Just imagine I have a class schedule कि आज 4 बजे मेरा एक फार्माकोलॉजी का क्लास है. But somehow I got a meeting. मेरा कोई मीटिंग आ गया. तो आज की डेट में क्या हो रहा है? मीटिंग कंटिन्यू भी होगा, क्लास भी कंटिन्यू होगा. कैसे होगा? If we have a digital platform जहां पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, if we got a digital platform जहां पे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, my clone can pop in and take the classes. मेरा क्लोन आके आपका क्लास ले सकता है. So this is the power of technology, number one. Number two, Akanksha Chaudhary ma'am, you are asking something. I think let me complete it and then you can ask the question. Now, we are going to launch an institute. यहाँ पे पूरी की पूरी क्लोन टेक्नोलॉजी हमने इंटीग्रेट किया है. अगर कोई भी फैकल्टी हमारा छुट्टी पे है, the class is going to continue. अगर मेरी प्रेजेंटेशन रेडी है, प्रेजेंटेशन को डाल के we can create the entire class for the students. This is the power of technology. Number one. Number two, मैं स्क्रीन पे एक छोटा सा चीज आपको दिखाता हूं, which you will able to understand it. Is my screen visible? Learn, unlearn, and relearn. You must have seen it. You must have listened about it. The new dynamics of education is daily learning and fast learning. Mark my words, ladies and gentlemen. आप लोग सारे faculties हैं. The 4-year courses of B.Pharm over next 5 years going to be concise to 3 years and 2.5 years. The revolution has already started in US and Europe. 4 साल का graduation का program could be squeezed to 3 years and 2 years. 2 साल का program 1 साल में squeeze हो जाएगा. क्यों हो जाएगा? The reason for that is the learning which is getting faster. जो चीज हम पढ़ने में हमारी टाइम पे, मैं बोलता हूं मेरे टाइम पे जब मैंने फार्मेसी किया था, we don't have that point in time the internet was costing 1 hour 20 rupees or 10 rupees that point in time. कतार पे लाइन पे हम लोग लग के जाके इंटरनेट यूज करते थे. Today internet is in the air. The knowledge is in the air. The person which is going to grab it, learn it and deliver it is going to learn. So this is power of AI and machine learning. मैं एक आपको वेबसाइट बताता हूं, आप 2 वेबसाइट बताता हूं आपको. अगर आप लोग यूज नहीं कर रहे हैं, आज शाम को जाके एक बार यूज करेंगे, it will blow your mind completely. अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं, one is Gemini notebook.
Now what does Gemini notebook do? मेरे को कोई रिसर्च करना है, मेरे को कोई कंटेंट क्रिएट करना है, I go to Gemini notebook and just put a prompt कि इस टॉपिक के ऊपर मुझे रिसर्च करना है. Within 10 to 15 minutes, Gemini is going to go inside multiple public domain, credible source of information, at least 50 to 60 credible source of information. We'll pull out the information to create a research paper for you, to create a content for you. Number one, out of that content in the same platform, you can create audio podcast, you can create video podcast, you can create PPT presentation, you can create infographic, you can create mind map. मैं छोटा सा आपको फिर से एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आप और बेटर समझ पाएंगे. नंबर वन, सपोज करो मैं फार्माकोलॉजी का या एनाटॉमी फिजियोलॉजी का मैं फैकल्टी हूं. नाउ आई एम गोइंग टू टीच कार्डियोवास्कुलर सिस्टम टू द स्टूडेंट्स. ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, हमारे पास एक पीपीटी है जिसमें हम बेस्ड ऑन द कंटेंट, कोर्स कंटेंट, हम उसको डिजाइन करते हैं. ये 10 स्लाइड है, 15 स्लाइड है, 20 स्लाइड है, एंड वी प्रेजेंट इट टू द स्टूडेंट. ट्रस्ट मी, आपके सामने जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, दिस इज स्टडी इज बीइंग कैरिड आउट. पीपीटी बेस्ड स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं, जिनको आप पढ़ा रहे हैं, चाहे पीपीटी से पढ़ा रहे हैं, चाहे वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं. अगर पीपीटी से पढ़ा रहे हैं, ओनली 33% ऑब्जर्व द कंटेंट दैट देन एंड देयर. 33% स्टूडेंट आपकी कंटेंट को ऑब्जर्व करते हैं, रेस्ट आर नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व देन एंड देयर. जस्ट इमेजिन, मैंने जो पीपीटी डिजाइन किया, मैंने उसकी लोकल लैंग्वेज में, जेमिनी नोटबुक के ऊपर आप जाएंगे, यू गॉट 100 लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग 16 इंडियन लैंग्वेजेस. हिंदी भी है, उर्दू भी है, बंगाली भी है, एवरीथिंग इज आउट देयर. मैंने जो मेरी कोर्स कंटेंट है उसको मैंने वीडियो बाइट्स में कन्वर्ट किया और उसको लोकल्स में कन्वर्ट किया. मैंने हिंदी में बनाया, मैंने बंगाली में बनाया, मैंने, अगर मेरे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, फॉर एग्जांपल अफ्रीकन स्टूडेंट्स है मेरे पास, आई वाज बीइंग इनटू केनिया फॉर सम टाइम, तो किस्वाली इज आल्सो देयर आउट देयर. मैंने वीडियो बाइट बनाया और मैंने स्टूडेंट को दिया. नंबर वन. अभी स्टूडेंट को सपोज करो वीडियो बाइट्स में भी नहीं समझ में आ रहा है, मैंने डिबेटेबल एक ऑडियो पॉडकास्ट बनाया. आप इमेजिन करिए, आपकी पीपीटी फ्रैक्शंस ऑफ मिनट्स में ऑडियो पॉडकास्ट में कन्वर्ट हुआ और आपने फिर अपने स्टूडेंट को दिया. एक बार करके देखिए आप. जो पीछे बैठा हुआ स्टूडेंट, जो आपको लगता है ना कि वो नहीं समझ पा रहा है, अगर वो नहीं समझ गया ना, मैं नहीं बोलता वो 100% समझ जाएगा. इट इज गोइंग टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ योर क्लास. बच्चे आपके पास आके बोलेंगे कि ऐसे ही करना है हमें पढ़ाई. आज हम लोग अभी, जैसे आई रन ए कंसल्टिंग कंपनी, जब हम बी फार्म स्टूडेंट की, एम फार्म स्टूडेंट्स के इंटरव्यू लेते हैं, ट्रस्ट मी, 99% स्टूडेंट्स आर फेल टू आंसर दैट हाउ मेनी सिस्टम्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी. बोलते सर बी फार्म में पढ़ा था, एमबीए के बाद हम भूल गए. अरे भूल कैसे गए यार? यू आर ए फार्मासिस्ट बाबा, यू आर बैकबोन ऑफ द हेल्थ केयर. आप बोलते हो मैं भूल गया. So the new dynamics, I am coming back again. Daily learning and fast learning is essential. How much you store inside your head is the vital for education today. IITs, IIM और हमारी इंस्टीट्यूट में, नॉर्मल इंस्टीट्यूट में, दिस इज द, हम बोलते हैं आईआईटी में सब अच्छे स्टूडेंट आते हैं. सारे तो एंटरप्रेन्योर नहीं बनते हैं आईआईटी से, सारे आईआईएम से एंटरप्रेन्योर नहीं बनते हैं. अब लिस्ट उठा के देखिए कितने लोग आईआईटी से, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है, कितने लोग आईआईटी से आते हैं? नहीं आते. एंटरप्रेन्योर्स थॉट प्रोसेस क्रिएटेड इन द क्लासेस. जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं बोलता हूं मार्क लाना जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है. ट्रस्ट मी लेडीज एंड जेंटलमैन, गोइंग फॉरवर्ड नोबडी इज गोइंग टू आस्क द स्टूडेंट्स व्हाट इज द सीजीपीए यू स्कोर्ड. इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है. What is going to be asked is, what is the skill sets that is you are carrying with you? क्या anatomy physiology मेरे दिमाग में फीड है? क्या pharmaceutics मेरे दिमाग में फीड है? The interviewer asks a question and I am able to answer. Number one. Number two, बहुत बड़ी कंप्लेन है स्टूडेंट्स की, फार्मा कम्युनिटी में या लाइफ साइंस कम्युनिटी में. देयर इज अ बिगर कंप्लेन की अगर हम पूछते हैं एनालिटिक्स के ऊपर आप कुछ करा है क्या आपने, बोले नहीं, अभी मेरे को बताया गया
I was speaking to one of the मेरी colleague हैं डॉक्टर प्रोफेसर अरुण गर्ग, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है मेरे. उन्होंने बताया कि मानस जी अभी पाइथन आया है हमारे पास, पाइथन. Now somebody invited me in a top class MBA institute कि सर आप पाइथन पढ़ाओगे क्या? मैंने बोला ठीक है पढ़ा देंगे. सर कितना टाइम लगेगा? मैंने बोला 1 घंटा. बोला नहीं, 1 घंटे में पाइथन कैसे पढ़ाओगे? How you are going to teach Python in 1 hour? सर ये तो कोडिंग बेस्ड है. मैं कोडिंग, आर यू IT guy? Are you going to do a coding in your classes? Are you going to pull out the people, the faculties who are going to teach you how to do the coding? No. आप चार्ट जीपीटी पे जाइए, क्लॉड पे जाइए, किसी में भी जाइए, आप जाके खाली एक एक्सेल को अपलोड करके लिखिए जरा कि काइंडली डू द एनालिसिस एंड गिव मी इंटरैक्टिव डैशबोर्ड. इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स एंड आपके सामने पूरा का पूरा एक लिंक आएगा जो आप वो नीचे लिखेगा आपको कि द एनालिसिस इज गोइंग ऑन इन पाइथन. और व्हेन यू आर पुटिंग दैट एक्सेल इनटू चार्ट जीपीटी, आप इसको लिखो डू द एनालिसिस वाया पाइथन, डू द एनालिसिस वाया R1, do the analysis via SQL. It will run it. So today need is that yes, Python understanding, basic understanding has to be there, but do I need to spend that much of time to learn Python? So this is called fast learning. This is called daily learning. Number 1. Number 2, अगर अभी हमें लग रहा है AI and machine learning will be a class based curriculum, it is not. Ladies and gentlemen, पिछले 18 महीने से I am spending daily 3 hours on AI. 18 महीने से I am spending daily 3 hours on AI. जब भी आप मेरे इंस्टाग्राम में ओपन करता, मुझे कोई वो रील देखने के लिए नहीं ओपन करता. The moment I open my Instagram, it's all AI, AI and AI. I don't follow anybody apart from the AI teachers. अगर आपको लग रहा है कि आप कोई भी वर्कशॉप पे जाएंगे, आपको चार्ट जीपीटी कैसे यूज करना है, क्लॉड कैसे यूज करना है, वो सीखने के लिए मिलेगा. आप सीख जाएंगे और आपके जीवन में काम खत्म. यू आर रेडी, यू आर AI इन्फ्यूज्ड गाय. नो, दिस इज डेली कुआं खोदो एंड डेली पानी पियो वाला कैटेगरी बन गया है. द मूवमेंट जो आज आप वर्कशॉप में सीखोगे, कोई भी वर्कशॉप, किसी की भी वर्कशॉप पे जाते हो, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग अराउंड इन द मार्केट, लेकिन बेसिक्स को समझना जरूरी है. Chat GPT is never meant for writing an email ID. Ladies and gentlemen, let me tell you, Chat GPT is never meant for to refine my language. Chat GPT is never meant for pulling out the information and creating my own thesis. It is not. अगर आपको लग रहा है कि मेरे को चार्ट जीपीटी मिल गया है, दिस इज माय पर्सनल असिस्टेंट, इसी को लगा के काम करूंगा, यू आर मेकिंग योर ब्रेन डेड. एक चीज आपको बता देता हूं, AI और machine learning is not going to work independently without domain expertise. मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं, you'll be able to understand it better. One of the leading pharma company, नाम नहीं लूंगा, one of our client, one of the leading India's leading pharma company, उन्होंने बोला मानस हमारे पास ना 10,000 सेल्स की लोग हैं. सेल्स की लोगों का मैं आपको पता होगा कि देयर इज ए पॉलिसी एंड प्रोटोकॉल, UCMP गाइडलाइन बोलते हैं, जहां पे मार्केटिंग कोड ऑफ एथिक्स की अंडर द फार्मा कंपनी आर नॉट अलाउड टू डिस्पोज मोर देन 20,000 वैल्यू टू ए डॉक्टर. मतलब एक डॉक्टर को 20,000 से ऊपर कुछ गिफ्ट ना दे सकते, ना उससे ऊपर कुछ नहीं दे सकते. आप समझो कि एक फार्मा कंपनी है जिसकी 40 स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है, जिसको हम डिविजन्स बोलते हैं. अगर वो 40 एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास एक एक गिफ्ट भी देके आ गए तो एक दिन में ही वो 20,000 टाप जाएगा. नाउ दे टोल्ड कि यार एक्सेल में हमारे पास डाटा है, हमने एक IT कंपनी को बोला था, उसने सिस्टम तो बना दिया है, बट बाय द टाइम आई गेट ए इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फील्ड, वो महीना गुजर जाता है, फिर मेरी प्रोटोकॉल इज गेटिंग ब्रीच्ड. जो 20,000 में मैं गाड़ी रोकना चाह रहा हूं वो रुक रहा है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू मैनेज द एंटायर सिस्टम. कि सर आपका कितने डॉक्टर ऐसे हैं जिनको आपकी 40 डिवीजन के लोग मिलते हैं. देन यू एबल टू डिजाइन इट. अगर आपको ये नहीं पता है, बेसिक्स नहीं पता है, डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है, knowledge independently is not going to work. Technology and knowledge is going to be work very, very rapidly.
लेडीज एंड जेंटलमैन, माय रेस्पेक्टेड फैकल्टीज, जितने लोग आप लोग हैं यहाँ पे, आपने जो पढ़ाई किया था वो जितनी मजबूती के साथ किया था ना, आज की पढ़ाई उससे 2 स्टेप आगे हो रहा है। क्यों हो रहा है? कंटेंट रिमेन सेम। हार्ट का 4 चैम्बर था, वो 8 चैम्बर नहीं बन गया है। There are 4 chambers means 4 chamber. But the way the teaching dynamics is getting changed, कि पहले हम बोलते थे कि ये राइट वेंट्रिकम है, लेफ्ट वेंट्रिकम, राइट एट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम है, अब इसमें से सुपीरियर वेना का ब्लड, that remains same. But the way you are going to teach the people, आपकी टाइम में YouTube नहीं था, मेरे टाइम में YouTube नहीं था. आज the students can get into YouTube, just put a मतलब एक लिख दें खाली कि get me cardiovascular systems video, हजारों की तादाद में वीडियो आएगा. Now it's up to a student. मैं फिर बोलता हूँ, knowledge is in the air, but मेरे को क्या चाहिए वो मुझे पता होनी चाहिए. मैं फैकल्टी हूँ, मेरी अकाउंटेबिलिटी फार्मास्यूटिक्स का है, तो क्या मैं स्टूडेंट्स को फार्मास्यूटिक्स के ऊपर क्या पढ़ाऊं ऐसे जो कि इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड हो, इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड हो. जब मेरे स्टूडेंट पास करे, इट इज नॉट अबाउट ओनली एजुकेशन. अभी हमारी फार्मेसी के बच्चों में, लेट मी टेल यू, वी हायर पीपल फ्रॉम नर्सिंग मोंजी, वी हायर पीपल फ्रॉम नाइपर, वी हायर पीपल फ्रॉम एचएमआर, वी डिप्स थ्रू जामिया, सब जगह से लोग हायर करते हैं. What is the biggest drawback today in the students are, forget about AI and machine learning, which is can pop up just 1 year before. The biggest problem is the skill sets. अभी मैं बोलता हूं कि एक इंटरव्यू होना है, इंटरव्यू में बैठने के लिए, रिज्यूम बनाने के लिए, व्हाट आर द कैपेबिलिटी यू रिक्वायर एंड हाउ यू कैन यूज AI. मैं आपको एक छोटी सी चीज बोलता हूं, आज आप जाके करके देखिएगा. आप सब लोगों ने अपनी रिज्यूम बनाकर अपने पास रखा होगा. claude.ai पे जाइएगा और रिज्यूम को डाल के खाली उसमें लिख दीजिए कि काइंडली एनालाइज दिस माय रिज्यूम एंड रिफाइंड इट बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट. इट विल ब्लो योर माइंड लेडीज एंड जेंटलमैन. लेट मी टेल यू, आप और मैं और एक HR कंसल्टेंट को हायर करके बिठाएंगे, उसको पैसे देंगे, जो नहीं करेगा ना मशीन लर्निंग और AI इज गोइंग टू गिव इट टू यू. आप रिसर्च करते हैं, इतना सारा कंटेंट मुझे सर्च करना है, या मुझे थेसिस लिखना है, या मुझे मार्केट की डायनामिक समझना है, क्या चार्ट जीपीटी, क्लॉड या परप्लेक्सिटी या जेमिनाई बेस्ट है? नहीं है. आपको ढूंढना पड़ेगा क्या बेस्ट है. अभी जस्ट 15 दिन पहले एक प्लेटफॉर्म आया, अपोडेक्स AI, APODEX.ai, अपोडेक्स AI. आप जाके सर्च करके देखिए उधर. पहले तो ये वो इतनी सुपर फास्ट है और इतनी कंटेंट क्रिएट करके देता है, इट विल ब्लो योर माइंड. अभी मैं एक छोटी सी चीज आपको करके दिखाता हूँ. सपोज करो आप हैदराबाद जाते हो. माय वॉइस इज ऑडिबल लेडीज एंड जेंटलमैन? इज माय वॉइस ऑडिबल? कैन समबडी कंफर्म? ओके, थैंक यू, ग्रेट. मैं हैदराबाद जाता हूँ, मेरे को तेलुगु नहीं आता, मैं क्या करूंगा? What you people do? मैं आपको करके दिखाता हूँ. What is the power of AI? Hi Perplexity, can you hear me? Yes, I can hear you. Yes, too. yes. How can I help you today? I am going to speak in English. Can you convert it into real time into Telugu? Sure, I can help you with that. Please go ahead and say what you'd like translated into Telugu, and I'll translate it for you. Okay, I am meeting one of my friend, Arun Garg sir, after a long time. I am going to speak to him. Hi Arun sir, how are you? Long time. It's been 3 years. I am trying to call you in your mobile number. Your mobile number is not working. Where are you these days? ఈ రోజు మీరు ఎక్కడున్నారు? Please continue. తప్పకుండా మీ సందేశం మొత్తం తెలుగులో ఇలా ఉంటుంది. హాయ్ అరుణ్ సార్, ఎలా ఉన్నారు? చాలా కాలం అయింది కదా, 3 సంవత్సరాలు అయింది నేను మీ మొబైల్ నంబర్ కి కాల్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను, కానీ మీ నంబర్ పనిచేయడం లేదు.
ఈ రోజులు ఎక్కడున్నారు? ट्राई करके देखिएगा, चैट जीपीटी में एक वॉइस मोड है, वहां पे ऑन करके व्हेन यू आर स्पीकिंग टू समबडी, सपोज करो आपके कॉलेज में कोई बाहर से आ रहा है एडमिशन लेने के लिए, बोलता है आई कैन ओनली अंडरस्टैंड तेलुगु, आई कैंट अंडरस्टैंड हिंदी, आई कैंट अंडरस्टैंड इंग्लिश। इसको ऑन करके उसके टेबल के ऊपर रखिए, उसको कमांड दे दीजिए, आई एम गोइंग टू स्पीक टू समबडी इन फ्रंट, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम गोइंग टू स्पीक इन हिंदी, उसको तेलुगु में बताओ, वो जो तेलुगु में बोलेगी मेरे को हिंदी में बताओ। वेरी सिंपल, दिस इज पावर ऑफ एआई। वो टाइम गया कि मैं जाऊंगा ट्रांसलेट करूंगा गूगल में, खत्म। मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ, आपकी व्हाट्सएप के ऊपर आप जाएंगे, एक जेमिनाई करके आपको दिखेगा, मेटा का वो दिखेगा, जेमिनाई सॉरी मेटा दिखेगा आपको व्हाट्सएप पे, उसकी वॉइस मोड पे ऑन करके ना खाली उसको इतना बोलिएगा, ट्राई करिएगा एकदम। आज बिल्कुल मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, मेरे पास ना 10,000 रुपए है मेटा, मेरे को ना नैनीताल घूमने जाना है, मैं दिल्ली से जाऊंगा नैनीताल घूमने, मेरा पूरी 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 की पूरी ना प्लान करके दे मेरे को, पूरा मेरा टूर प्लान करके दे, उसमें होटल भी होना चाहिए, उसमें कैब भी होना चाहिए, होटल का नंबर मेरे को दे देना, मुझे कैब के भी वाले के नंबर दे देना। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स इट विल पॉप अप इन योर सिस्टम। आपके मोबाइल पे, आपको लैपटॉप पे जाने की जरूरत नहीं, इट विल पॉप अप इन योर लैपटॉप। आप जब खोलते हैं व्हाट्सएप ना, आप ऊपर सर्च करेंगे मेटा, उसमें एक बार डाल के देखिए। चलो और एक चीज आपको करके दिखाता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ कहीं घूमने, फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली जा रहा हूँ घूमने, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ घूमने, मैं पहली बार दिल्ली जा रहा हूँ। मेरा आई गॉट क्या बोलते हैं, फाइव मीटिंग मेरे को। हम क्या जनरली क्या करते हैं, हम जाएंगे गूगल मैप में डालेंगे, हाँ भाई मैं रहूंगा अभी द्वारका में, मेरे को अपोलो जाना है सरिता विहार, द्वारका टू सरिता विहार, टाइम खत्म। इधर मैं आपको करके दिखाता हूं, आपको खाली इधर बैठ के बोलना है और पूरा का पूरा वो आपका टूर प्लान बना के देगा, आपका पूरा का पूरा डे का प्लान बना के देगा। जस्ट लिसन टू मी फॉर अ सेकेंड। हाय परप्लेक्सिटी, Hi there, how can I help you today? हिंदी में बात करें थोड़ा। जरूर, हम हिंदी में बात कर सकते हैं। बताइए आपको किस बारे में जानना है या किस चीज में मदद चाहिए? अच्छा ऐसा है भाई, मेरे कल ना मेरा दिल्ली में 5 मीटिंग है, मैं तेरे को बताता हूँ मेरा 5 मीटिंग कहाँ कहाँ पे है। नंबर 1, हर मीटिंग के बीच मुझे 1 घंटे का ट्रैवल का मैंने गैप चाहिए। दूसरा, मुझे हर मीटिंग के लिए 40 से 45 मिनट चाहिए। टाइमिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुबह से रात 9 बजे तक मैं काम कर सकता हूँ। मैं रहता हूँ द्वारका सेक्टर 5 में। मेरा एक मीटिंग है मैक्स हॉस्पिटल साकेत में, एक मीटिंग है मणिपाल द्वारका में, एक मीटिंग है मेरा अपोलो में, अपोलो सरिता विहार में, एक है मेरा कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में, और एक मीटिंग है मेरा यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद में। मेरे को थोड़ा प्लान करके बता मैं कैसे कैसे दिन में मूव करूं। जरूर, मैं आपके लिए एक योजना बना देता हूँ। आपने बताया कि आप द्वारका सेक्टर 5 से शुरू करेंगे, मीटिंग में 40 से 45 मिनट लगेंगे और मीटिंग्स के कम से कम 1 घंटे का ट्रैवल गैप चाहिए। आप सुबह से रात 9 बजे तक काम कर सकते हैं। चलिए एक क्रम सुझाता हूँ जो दूरी और सब ध्यान में रखे। पहला, सबसे पहले आप पास वाले मीटिंग में शुरू करें, यानी मणिपाल अस्पताल द्वारका। यहाँ सुबह 7 बजे मीटिंग रख लें, 7 से 7:45 तक मीटिंग हो जाएगी। दूसरा, फिर आप द्वारका सेक्टर 5 से मैक्स हॉस्पिटल साकेत जाएंगे। ये यात्रा करीब 1 घंटे से थोड़ा अधिक हो सकती है, तो 9 बजे तक पहुंचने की योजना बनाएं। मीटिंग 9 से 9:45 तक कर लें। तीसरा, साकेत से अपोलो सरित। जस्ट इमेजिन, आपके डिवाइस में ही सब कुछ है, क्या आपने उसको यूज किया है? एक ना एडवर्टाइजमेंट आता है, आई एम श्योर यू पीपल मस्ट हैव सीन दिस एडवर्टाइजमेंट। क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? ये एडवर्टाइजमेंट सबने देखा होगा, करेक्ट? मैं पूछता हूँ क्या आपकी मोबाइल पे डिफरेंट एआई एप्लीकेशंस आपने इंस्टॉल किया है? अगर किया है, क्या यूज किया है? खाली टूथपेस्ट में नमक होने से नहीं होगा ना, क्या टूथपेस्ट को आपने टूथब्रश में लगा कर पेस्टिंग किया है? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अभिषेक सर, यू मेंशन्ड दैट अनलॉकिंग द पोटेंशियल। मेरे पास 1 घंटा है, मैं जितना बात कर सकता हूँ आप लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। आप लोग सब व्हाट्सएप खोलिए। आपको क्या पता है आपकी व्हाट्सएप पे कैलेंडर है, जो मीटिंग टाइम आप ब्लॉक करना चाहते हो आपकी व्हाट्सएप पे मौजूद है? किसी ने देखा है कभी?
मैं आपको बताता हूं, आप व्हाट्सएप पे जाइए, आप किसी को मैसेज भेजने के लिए, अपने आप को मैसेज भेजने के लिए ओपन करिए, कोई भी किसी को मैसेज भेजने के लिए ओपन करिए, किसी को भी। अब उसमें जिस बटन को, जिस पिन को क्लिक करने से हम लोकेशन भेजते हैं, उस पिन को क्लिक करिए, जस्ट क्लिक ऑन दैट पिन। व्हाट्सएप पे जाइए, किसी को मैसेज करने के लिए ओपन करिए, और जहां पे जिस बटन को क्लिक करके हम लोकेशन भेजते हैं, उसको क्लिक करने में आपको एक ना बॉक्स खुलेगा जिसमें एक बटन आ रहा होगा, इवेंट, इवेंट करके एक बटन आ रहा होगा। कैन एवरीबॉडी सी दैट? इवेंट करके बटन आता है। जिस बटन को क्लिक करने में लोकेशन भेजते हैं, उसमें जब क्लिक करेंगे इवेंट का बटन दिखेगा। अब इवेंट पे जाके इवेंट का नाम डालिए। सपोज करो आपकी क्लास है, फार्मास्यूटिक्स का क्लास है कल 2 बजे, आपने वहां पे डाला फार्मास्यूटिक्स क्लास, स्टार्टिंग टाइम, डेट सब आता है। आपने उसको अपने आप को मैसेज भेज दिया, या आपने स्टूडेंट ग्रुप में मैसेज भेज दिया। स्टूडेंट को आप इनवाइट नहीं भेज सकते, या मैं पर्सनल काम के लिए मैं अगर यूज करता हूं, मैं अपने आप को इनवाइट भेज कर रखता हूं, आज ये मेरी दिन की शेड्यूल है तो मेरी मोबाइल पे ये रहेगा, 15 मिनट पहले वो पॉपअप कर जाएगा। सो दिस इज द पावर ऑफ एआई। हम छोटे छोटे चीजों से कैसे सीखेंगे, दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैं फिर रिपीट करता हूं, AI is not going to work independently. AI is not going to work independently without domain expertise. अगर AI इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता, अभी 1 साल के अंदर वर्ल्ड मार्केट में अफरा तफरी मच चुका होता। मैं फार्मास्यूटिकल में काम करता हूं या लाइफ साइंस में काम करता हूं। पूरी हिंदुस्तान में, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी वेरी प्रिसाइजली, ये इतनी बड़ा AI चल रहा है, वो चल रहा है, वो ढिमकान फलाना चल रहा है, ढिमकाना चल रहा है। पूरी हिंदुस्तान में एक भी AI कंपनी नहीं है जो फार्मास्यूटिकल मार्केट की डाटा को एक्सेस करके उसके ऊपर डाटा मॉडल क्रिएट करके बता दे कि भाई ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। क्यों? क्योंकि द कंपनी लाइक गूगल, द कंपनी लाइक क्लाउड, द कंपनी लाइक ChatGPT और OpenAI और Gemini, whoever it is, they need to understand dynamics of an industry. They need to understand the domain expertise of the industry. Atorvastatin cardiovascular segment में, blood thinner में segmentation में जाता है, ये समझने के लिए AI को टाइम लगेगा। आप जैसे फैकल्टीज या आप जैसे प्रोफेशनल्स जो हैं, इस चीज को आप 2 मिनट में रिजॉल्व कर सकते हैं कि भाई ये एस्पिरिन, अटोरवास्टाटिन, ये टेलमिसार्टन है, ये ARB कैटेगरी में आता है। इट इज नॉट दैट इजी, इट इज नॉट दैट इजी लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू। अगर इतनी इजी होता, अभी पूरी वर्ल्ड मार्केट में अफरा तफरी मच चुका होता। AI हमारी जॉब नहीं खाने वाला। AI कहां पे जॉब को रिप्लेस करेगा, मैं आपको बड़ा क्लियरली बोलता हूं। जो व्हाइट कॉलर जॉब्स है, नाउ व्हाट इज व्हाइट कॉलर जॉब? व्हाइट कॉलर जॉब इज BPO, कॉल सेंटर। क्यों? क्लोन्स आ गए हैं। आप नंबर डालिए, स्क्रिप्ट बता दीजिए। आई एम श्योर आप लोगों को अभी जो कॉल्स आती होगी एयरटेल से, वोडाफोन से, अब कोई लड़की का नहीं आता है, सारे AI है। 10-10 हजार की जो पूरा गुड़गांव में सीट्स ऑक्युपाइड रखते थे BPO की इंडस्ट्री, सब बंद हो चुका है। सो मैं फार्मा की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं, द टाइम हैज कम। आज ए फैकल्टी, स्टूडेंट नहीं, आज ए फैकल्टी, और हर फैकल्टी स्टूडेंट के माइंडसेट में काम करना चाहिए। अगर हमें ये लगता है, मैं आपको सही फिर से बोल रहा हूँ, पिछले 18 महीने से 16 महीने से मैं डेली 3 घंटा 2 घंटा लगा रहा हूँ AI के ऊपर, और जब भी मैं 2 घंटा रात को 3 घंटा लगा रहा हूँ, मुझे लग रहा है अभी तो चालू हुआ है। इट्स बीइंग 2 years पास्ट, इट सीम्स दैट कि अभी तो चालू किया था, अभी तो ये नया नया चीज है। डेली आप अगर इंस्टाग्राम में जाके 10 AI की टीचर्स को फॉलो कर लेंगे और रात को सोने से पहले अगर उतना भी वीडियो आप देख लेंगे, तो आपका काम, आपको रात को नींद उड़ जाएगा कि उठ के उसी टाइम बैठ जाओगे, ये कौन सा प्लेटफॉर्म आ गया है। मेरे पास समय की कमी है। सत्येंद्र सर को मैंने बोला था, सर को बोला, सर ने बोला नहीं शेड्यूल रेडी हो गया है। मैं फैकल्टी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए AI ट्रेनिंग करता हूँ। 6 से 7 घंटे की ट्रेनिंग होती है, जहां पे मैं आपको बताता हूँ
कि आप खुद आज ए फैकल्टी कैसे स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, कैसे रिसर्च प्रोग्राम को नेविगेट करेंगे। दरअसल किसी सर का मुझे फोन आया कि मानस जी मुझे फार्माकोलॉजी में थोड़ा सा रिसर्च करना है। मैंने बोला सर बिल्कुल कर सकते हैं। We as a faculty need to prepare ourselves for this disruption technologies called AI ML, to infuse ourselves, to understand ourselves, to absorb ourselves. पहले हम absorb करें। जब हम absorb करेंगे तो स्टूडेंट को फिर हम पढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमने जो पढ़ा था वो 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल पढ़ा था, और हमें जो पढ़ने के लिए 4 घंटे लगते थे, आज वो स्टूडेंट को 40 मिनट लगता है। They have their different way and dynamics, but my request to all of you, for the sake of using AI and ML, do not make your brain dead. मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ why I am saying this. Why I am saying this? अभी I run a consulting company. सिंपली आपको बताता हूँ क्यों मैं ये बोल रहा हूँ। हमारे पास पहले ये ML नहीं था। हम पहले डाटा कलेक्ट करते थे, उसको एक्सेल में डालते थे, एक्सेल में बैठ के एनालिसिस करते थे, फिर एक्सेल से हम पीपीटी बनाते थे। पीपीटी बनाने के टाइम हमें सोचना पड़ता था कि कैसे पीपीटी बनाए, कैसे पीपीटी का स्ट्रक्चर रहना चाहिए, कैसे अट्रैक्टिव होना चाहिए। सब खत्म। अभी एक्सेल बन गया। 40 मिनट्स में जो काम हम लगाते थे 3 दिन टू डू द एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, बैठ के कॉन्फ्रेंस रूम में, वहां पे 40 मिनट में आपने एक्सेल डाला, प्रॉम्प्ट लिखा, चाय पीने नीचे गए, ऊपर आते आते आपकी पीपीटी रेडी। फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूं कि मेरे को अभी एक क्लास लेना है। सपोज करो अब यहाँ पे मैं, जैसे कि मैं छोटे शहर में जाता हूँ, जैसे उड़ीसा है या झारखंड है, बिहार है, बहुत छोटे छोटे शहर है, जहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है, मेरे को सुनने में आया है कि फार्मास्यूटिक्स की सर को बोल दिया गया कि आज अपना एनाटॉमी का क्लास ले लो आप। अरे वो सर बोल रहे यार मैं तो सुना मेरे पास ना पीपीटी है ना कुछ है, मेरे को अभी समय लगेगा। नहीं लगेगा सर, आपको ये बताओ कि पढ़ाना क्या है। 40-45 मिनट 1 घंटे के अंदर आपकी एक बहुत ही जबरदस्त डायनामिकली रेडी पीपीटी बनकर रेडी हो जाएगा। सो दिस इज द पावर ऑफ है। लेकिन क्या जो पीपीटी बन रहा है, सपोज करो मैंने एक पीपीटी बना लिया, एनालिटिकल पूरा पीपीटी बन गया, am I able to read that PPT? I'm able to interpret the whatever is written in the PPT? अगर वो नहीं है तो actually you are not doing AI. You are making your brain dead. So with the rest of time, my request to all of you, all my sincere senior faculties, मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ। मेरे को किसी ने मेरा पहला ट्रेनिंग में आज से 1 साल पहले पूछा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा था कि सर Do I need to be an engineer to write a prompt? ये prompt engineering क्या होता है? अरे नहीं रे बाबा, you need not to be IT guy, you need not to be an engineer to write a prompt. Prompt is a context. What you aspire to get it from the machine. आपके सामने एक मशीन है। अभी आप चैट जीपीटी में रात को जाइएगा, मैं आपको बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ। वहां पे एक वॉइस मोड है, सब लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं, वहां पे एक वॉइस मोड है। आप उसको ऑन करके ना, आप उसके साथ बात करिए। हाँ भाई, थोड़ा सा मेरे को बताना जरा ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना। इट विल स्टार्ट स्पीकिंग टू यू इन योर ओन लैंग्वेज। दिस इज पावर ऑफ एआई। कि मेरे को टीचर ने कुछ पढ़ाया, टीचर ने मेरे को वीडियो बाइट्स भी दिया, टीचर ने मेरे को ऑडियो पॉडकास्ट भी दिया। मेरे को टीचर ने ये बोला कि भाई तू अभी खुद बना, मैं जो तेरे को बना के दे रहा हूँ फॉरगेट अबाउट इट। अब तू अपना प्रेजेंटेशन खुद बना, खुद पीपीटी बना, खुद ऑडियो पॉडकास्ट बना, खुद सुन, एंड कम बैक टू मी एंड टेल मी व्हाट इज योर लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। क्या तेरे को समझ में आया? दिस इज नॉलेज एक्सचेंजिंग, फास्टर नॉलेज एक्सचेंजिंग प्रोसेस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आप एक बंदा है जिसका नाम है एलन मस्क। आई एम श्योर यू मस्ट हैव, एवरीबॉडी मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस। वो बोलते अभी हायरिंग इन द एंटायर वर्ल्ड, जितनी भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी में हायरिंग हो रही है, वो सीजीपीए में नहीं हो रही है। अभी आप सर्च करिएगा, 2 दिन पहले इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, आईआईटी दिल्ली में एक बंदा पहुंचा, बोला कि सर मुझे ना साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन दे दो। बोला कि भाई तूने वो जेई क्वालिफाई किया? बोला नहीं। बोल रहे एडमिशन नहीं मिलेगा।
वो बंदा ने क्या किया, उसी आईआईटी कैंपस के पार्क में गया, आईआईटी दिल्ली की वो वेबसाइट को हैक कर लिया और जाके प्रोफेसर जो उनके एडमिशन हेड थे बोले सर देखना जरा वेबसाइट चल रहा है क्या? बोला नहीं चल रहा है। बोला मैंने हैक कर लिया। उसका इंटेंशन हैकिंग का नहीं था। द इंटेंशन वाज सर आई हैव द कैपेबिलिटी, कुड यू प्लीज गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न ओवर हियर। अब मुझे एडमिशन मत दो, मुझे ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ कि मैं आपको पढ़ सकूं आगे। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वयं करके एक प्लेटफॉर्म बनाया। मैं फिर रिपीट एक चीज, नॉलेज हवा में है। मुझे क्या चाहिए, कैसे पकड़ना है, वो मुझे आना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से है, आई लुक फॉरवर्ड टू लिसनिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको कोई भी एआई ट्रेनिंग प्रोग्राम कैरी आउट करना है, मैं अवेलेबल हूं। आप मुझे थोड़ा समय दे के बुलाएंगे, मैं ऑनलाइन भी कर सकता हूं, मैं फिजिकली आके भी कर सकता हूं। पिछले 1 साल में मैंने 10,000 स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ही ट्रेन किया है, 5,000 फैकल्टी को ट्रेन किया। नॉट ओनली फार्मा, इट इज नॉट ओनली फार्मा, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड तकरीबन 2,000 प्लस प्रोफेशनल्स को हमने ट्रेन किया है। कमिटमेंट पैसे कमाने से काफी ऊपर है। पैसा कमाना इज वेरी वेरी सेकेंडरी फॉर मी। मैं चाहता हूं मेरी फैकल्टीज, मेरी कैटेगरी की, मेरी इंडस्ट्री की, फार्मा की स्टूडेंट्स, फैकल्टीज, जो भी फार्मा में प्रोफेशनल्स, सब एआई सीखे। ये ना सोचे कि ये बहुत ही कॉन्टेक्चुअल है, इसमें तो घुस के समझना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। अगर आपको मूवी देखना अच्छा लगता है, केजीएफ पार्ट 1 पार्ट 2 देखना अच्छा लगता है, इफ यू आर रेडी टू स्पेयर 3-4 आवर्स, तो आप ये भी सीख सकते हैं। So thank you so much, Satyendra sir, for inviting me. I wish to take this session for a longer time, लेकिन due to lack of time, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। I hope I was trying best. I was trying my best to put the context in front of all of you, है ना? आप सबके सामने मैं context रख पाया कि AI machine learning can be learned by everyone. कोई पीछे बैठा है, आप मेरे को दे दो, मैं सिखा दूंगा है। अगर वो सीखने के लिए रेडी है तो वो सीख सकते हैं। दिस इज फ्रॉम माय साइड, ओवर टू यू। Thank you, sir, for such an informative session. Now, I would like to invite Director, sir, for giving vote of thanks. Thank you so much, everyone, for patiently listening me for last 45 minutes, for 50 minutes. I tried my best to give some insight out of it. सर आपकी आवाज नहीं आ रहा है सत्येंद्र सर, आई कैंट हियर यू। आपका म्यूट है सत्येंद्र सर, यू आर म्यूट। हेलो सत्येंद्र सर, यू आर म्यूट। Sorry. Good afternoon, everyone present over here. On behalf of BPS Educational Institute of Pharmacy, it is my privilege to extend my heartfelt vote of thanks to Dr.